launched. And this has brought about a change at the ground level which people find very wholesome and soothing, and is having an economic dimension. Historic. Bogeybill Rail-cum Road Bridge has been inaugurated only a few years back. Now, go to any part of the world, I can say without fear of contradiction, the kind of culture, rich culture, the kind of historical background, the kind of flora, fauna, the kind of parks and sanctuaries, the kind of religious places we have in this part of the country, we have nowhere in the world. Because of this continual enhancement in rail connectivity, the area is getting exposed to the rest of the countrymen in an effective manner. And look at the change that has been brought about when it comes to traveling to this part of the country apart from rail connectivity. The number of airports has gone from 9 to 17. And we have water grid hold. All this augurs well for development of this area and is indicative of our inclusive growth. I greatly admire and appreciate synergetic situation between the central and the state government in healthcare sector, in education sector. Last year, 7 cancer hospitals were opened in the state. They were opened and it did not end there, because your chief minister suffers from an ailment. He works 24/7. I don't know, we need to examine him medically. Where does he get all this energy? 24 घंटे काम करते रहते हैं, और प्रांत में नहीं, देश में भी करते हैं. One of the fiery orators, with his mind always set on rational approach. So he did not end with the 7 inauguration. Foundation stone of 7 cancer hospitals was laid across Assam by the Honorable Prime Minister. I have no doubt, and I am sure no one here and outside can have any doubt whatsoever, that this Honorable Chief Minister will get them completed before schedule. In education sector, and I am a product of education, I take education as the most effective transformational mechanism to bring about equity, equality, progress, development in society. Nothing can change societal situations more than people getting educated. In the education sector, which is main focus of the Honorable Chief Minister, the achievements are astounding. We can appreciate his efforts. They have fructified into ground reality. 190 new institutions of higher education were set up in the Northeast in 9 years, including Center of Excellence in Science and Mathematics Education at IIT Guwahati. In coming months, I'll be making a visit to Guwahati campus of the IIT. New avenues and vistas, my young friends, are now available to you as never before. And to promote youth, young students, impressionable minds, your Ishan Uday scholarship scheme is very helpful. And same is the case with 190 new skill development institutes that have come about. All over the world, India is being recognized for its skilled human resource. It is tribute to our DNA that we Indians pick up skills very fast. But if government comes forward with such kind of institutions,
then the development is not arithmetic, it is geometric. Friends, I would invite your attention to some of the creditable achievements, and the entire world is looking at us in admiration, with envy, that the most populous country on the planet, mother of democracy and very functional democracy, look at their attainments. 99.9% of adult Indians have digital ID. 99.9% Aadhaar. This Aadhaar is open to all, free. It is controlled by the government, not by a private agency. It has turned out to be a game changer in various facets of the lives of ordinary people. Let me tell you what one Nobel laureate, Paul Romer, described it. And the Nobel laureate and those who are outside the country do their homework when it comes to praising the country, when it comes to denigrating and decrying our country. That's a narrative. And he said, I quote, Aadhaar card is the most sophisticated ID program in the world. And let me invite your attention and focus to another great aspect which is changing the lives of people, ordinary people. Gem Trinity, Jan Dhan accounts. People of my age will recollect how difficult it was to open a bank account. And mind you, 300 million bank accounts were opened because of government initiative. Then Aadhaar number, mobile telephony, all this has resulted into something amazing. Direct bank transfers, faceless, totally transparent, totally accountable, with no middleman, with no deduction whatsoever. And let me tell you how it has impacted. Indian farmer, and this is amazing revolution, the world is looking at us. Indian farmer has got so far in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, 2.25 lakh crores, 11 crore farmers getting it direct by press of a button. Look back, we have achieved what even we could not dream earlier. Where are those long queues to make bill payments? Where are those long queues where you have to get a rail ticket? Right from passport to a ration card to making an application for employment, you don't have to get out of your village. Technology is at your door. Because a Herculean task, very daunting, unthinkable of achievement a few years ago, is a reality. That's a big change. Let me quote a figure, and that figure will give you an idea to what extent we have made direct payment by digital mechanism. This amount in 2022, direct digital payment in 2022, my dear friends, note the figure, 1.5 trillion US dollars. And if I put it for illustration, it is 4 times the combined transactions, 4 times the combined transactions of US, UK, Germany and France. Just imagine, our head should always be very high. As per International Monetary Fund, India is possessed as on date world-class digital public infrastructure.
We are a country now having 700 million internet users, and we have exceeded both China and US in that. Our startups, our unicorns make us very proud. Mudra scheme has made available a new avenue to everyone, not only to be a job seeker, but to be a job creator. And if we look at the amount that has gone by way of Mudra loans, 23 lakh crores, and of this, I am very happy to tell you, 70% are women. It was so gratifying to note today, while the Honorable Governor was honoring the students with their hard-earned degrees, I have not checked up the number, but our girls perhaps scored over the boys. Their number was more. Congratulations to all of you. In Assam, if I give a figure, 6.8 lakh entrepreneurs availed more than rupees 4,500 crore under Mudra scheme. These achievements, my dear friends, will help us attain our rightful position in the globe when we celebrate our centenary of independence in 2047. Some of us may not be around, but you are the warriors, you are the foot soldiers. It is on your shoulders that India will attain this great accomplishment. Friends, I need to caution you. When all is going well, why some of us decry our democracy? Why some of us go outside the country and inside the country, talk of unforced silence, say this country doesn't have the democratic values? I dare say with confidence and without fear of contradiction, India is the most vibrant functional democracy on the planet as on date. No country in the world can claim to have a constitutional democratic mechanism for the village, for the municipality, for the state, and for the parliament. I appeal to students. I appeal to intelligence and media. They have to act as ambassadors of this country. They have to believe in our nationalism. They have to run down this narrative, a narrative which has no factual basis. We cannot support those who in the country and outside tarnish, taint our growth trajectory and our democratic values. As Chairman Rajya Sabha, I know the freedom of expression available in this country is not subject to any unforced silence. Those who think so need to revise their opinion. Such false narratives are emanating also from some universities outside. It pains my heart. It will pain all of you that some universities in the US, it is only Indians and some Indian students who criticize their own country. You will not find another example where a faculty of a country, a student of a country will criticizing his own country outside the country. You will not find a politician who will trot all around the globe to tarnish our democratic values. And this is not India's culture. Bharat Ratan Atal Bihari Vajpayee, a former Prime Minister of this country, was chosen by Narasimha Rao ji to represent country when Narasimha Rao ji was Prime Minister. That's our culture. We have to believe in our motherland. We have to subscribe to the sublimity of our nationalism. Friends, a onus lies on you. You have to find a way out so that such kind of pernicious
sinister narratives are nipped in the bud. Friends, Parliament and educational institutions, they are temples. If in educational institutions you do not have an ecosystem which is education friendly, we will not be achieving our objects. Parliament is a place for dialogue, deliberation, discussion, and debate. Parliament is not a place for disruption and disturbance. How can we weaponize disruption, disturbance as a political tool? How can we allow these theatres to be so polluted? My young friends, Indian Constitution was formed by the Constituent Assembly in 3 years. During those 3 years, they debated very sensitive issues, some issues which could be taken as very divisive, very complicated and complex. There was no disturbance, not even a single disturbance. There was no disruption. There was an attitude of collaboration, not of confrontation. I beseech you, I call upon intelligentsia, I call upon media. It is time in Amrit Kal we help generate an ecosystem so that our parliamentarians respond positively to the spirit and essence of our founding fathers of the Constitution. I have no doubt, friends, after going outside from this university, after becoming its alumni, you will contribute to societal growth. But never forget 2 things. One, always respect your teachers. No education can fructify into a good human being without facilitation of a good guru. Your gurus help you, they shape you, they sharpen your talent with passion and mission. Always have respect for them. And secondly, never forget your university. Contribute for welfare of the university in whatever form you can, and you will find it will take you long. Have a dream, but don't allow the dream to be parked in your brain. A dream is not to be parked with the brain. The dream is required to be realized fearlessly without being in any case worried about it. Before I conclude, I will call upon the Honorable Chancellor and the Vice Chancellor. We need to harness the energy of the alumni. Alumni of any institution can make a huge difference. I have even visualized an idea of confederation of alumni that will constitute a spinal think tank for the country's welfare. Take your university, it has notable alumni. My very good friend, Sarma Sonowalji, a very distinguished former Speaker of Lok Sabha and a former Chief Minister from one of the states in this part, P.S. Sangma ji, Anuradha Sharma Pujari ji, and look at the first books he authored. Hriday Ek Vigyapan. Read it. That was her first work. Then you will have Manas Robin, singer and composer, Zubin Garg, singer and actor, National Award winners, and many more. I can keep on going. How it is structured, how it developed. Once again, friends, it's a delightful experience for me. I am grateful to the Chancellor and Vice Chancellor of the University, and a deep sense of gratitude for the Honorable Chief Minister.
who has not only made my visits to this state every time memorable, he also responded to one of my invitations to be at Darjeeling. Some people talk about Darjeeling Pact. I leave it at that. Once again, congratulations, best wishes to all of you. Be the agents of change. Thank you. Thank you. With the permission of the chair, may I request the august gathering to kindly stand up in your positions. Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, has to leave for Imphal on another engagement. So we are sincerely thankful for Sir's visit to the university, for having graced this occasion this morning along with Madam Dhankar. And we will definitely keep his words and take serious work on whatever he has advised us. Thank you very much, sir, for having delivered the convocation address. We are also sincerely grateful for the presence of the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa sir, for having addressed the convocation gathering this morning, I beg your pardon, and we are sincerely grateful for his having accepted our invitation and having shared his thoughts this morning with us. We look forward to further visits, and we look forward for your continued support in the growth of Dibrugarh University. Thank you very much, sir. We would wish to place on record the presence of the Honorable Minister of Education, Dr. Ronoj Pegu, for having graced this occasion as one of the distinguished guests. We would request Dr. Pegu to kindly stay on because the convocation proceedings will continue. We are sincerely grateful to Shri Jagdeep Dhankar, sir, Honorable Vice President, Republic of India, Madam Dhankar, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa for having been with us this morning and having graced this occasion. निवासाय नित्याय परमात्मने परभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। मम नाम प्रतापचंद्र षडंगी। अहं बालेश्वर संसदीय क्षेत्रतः संसदरूपेण निर्वाचित अस्मि। संसदरूपेण इदानीं कार्यं करोमि च। महज 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से उसे अलंकृत किया गया था, क्योंकि उसने करगिल युद्ध के दौरान 15 गोलियां लगने के बाद भी हार नहीं मानी और वो लड़ता रहा। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने साक्षात मौत को चुनौती दी थी और उसे पछाड़ा था। 27 दिसंबर 1996 में इन्हें भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में रिक्रूट किया गया था। 1999 में
करगिल युद्ध के दौरान इनकी टुकड़ी को टाइगर हिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने की जिम्मेदारी मिली थी। टाइगर हिल में घुसपैठियों की 4 चौकियां थी। मुठभेड़ शुरू हुई और पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद 7 सदस्यीय कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। दुश्मन की ओर से भीषण गोलीबारी में पहले 2 और फिर 4 शहीद हो गए। अंत में सिर्फ ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बचे, जिनके बाएं हाथ की हड्डी गोली लगने से टूट चुकी थी और उनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। राइफल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला, 3-4 बंदे और उनके मारे गए। फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि यार हाँ, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर उनके हौसले पस्त हो गए, वो पैर उखड़ गए और वहां से उनको भगा दिया। और इस तरह तीसरी चौकी पर भी भारत का कब्जा हो गया और टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा। पर इस पूरी कवायद में इन्हें काफी गोलियां लगी थी, खून काफी बह चुका था। इनका जीवित बचना इनके जीवट और मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। योगेंद्र यादव को इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश को ऐसे वीर पर अभिमान है। Grit and determination. Balraj Yadav captured the Tiger Hill, leading his Ghatak platoon. The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Himanta, only on Sansad TV. नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। स्मार्ट खेती दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं आज कोल्हापुर में, जहां किसानों का और गांव के लोगों का ट्रेड फेयर लगा हुआ है। इस ट्रेड फेयर में हजारों स्टॉल हैं, लेकिन हमने आपके लिए कुछ सिलेक्शन किया है, आपकी ज़रूरतों को ध्यान में सिलेक्शन किया है। अगर आप गन्ना किसान हैं तो आपको जब अपने गन्ने की कटाई करनी होती है तो उस समय कई बार मुश्किल आ जाती है। शुगर मिल बंद होने वाला होता है, लेकिन खेत में गन्ना खड़ा होता है। ऐसे में आप झटके में अपने गन्ने की कटिंग कर सकते हैं, लोडिंग कर सकते हैं, मिल पर पहुंचा सकते हैं। किसानों के पास जो ऑलरेडी ट्रैक्टर अवेलेबल रहता है, 45 HP के ऊपर का जो भी ट्रैक्टर रहता है, वो ट्रैक्टर के ऊपर एक गन्ना कटाई मशीन हम अटैच करके देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो खड़ा गन्ना रहता है पूरा कट हो जाता है। कट होने के बाद उसका पाचट जो रहता है वो पाचट हम निकाल लेते हैं और उसको लोडिंग भी करते हैं। ये टोटल 3 इक्विपमेंट्स है हमारे पास, गन्ना कटाई मशीन, पाचट निकालने वाला मशीन और लोडिंग करना मशीन, करने वाला मशीन। ये तीनों मिला के एक 5-5.5 लाख में उनका पूरा गन्ना कटाई का पूरा काम हो जाता है। ये 45 HP पर चलने वाला हमारा हंजे गन्ना कटाई का मशीन देखा आपने, ये ट्रैक्टर के ऊपर चलता है। बाद में ये पत्ती निकालने वाला जो मशीन है, ये छोटा हमारा पावर ट्रेलर का इंजन रहता है, किसानों को जो रखता है, ये पावर ट्रेलर के इंजन पे चलता है। इसका प्राइस खाली 1,15,000 रुपये है। ठीक है, ये पूरा पाचट निकाल लेगा। पाचट निकालने के बाद वो तीसरा जो हमारा जो मशीन है वो लोडिंग का है, जो शुगर गन्ना लोडिंग कर जाता है। ये गन्ना लोडिंग वाला मशीन 95,000 में है। ये 3 HP या 5 HP के इंजन पे चलता है, हमारा डीजल इंजन पे चलता है। कसौटी ये है कि आपका गन्ना खड़ा हुआ होना चाहिए। एक मास्टर सॉल्यूशन भी होता है, आपका गन्ना खड़ा हो, पड़ा हो, लेटा हुआ हो,
वो सारे गन्ने को निकाल भी लेता है, पत्ती भी छील लेता है और लोड भी कर देता है। अभी गिरा हुआ गन्ना है, उसके लिए भी हमने ये टुकड़ा करने वाला मशीन हमने ये लॉन्च किया है। उसको भी आपको 45 HP का ही ट्रैक्टर लगता है। आपके पास जो किसानों के पास जो 45 HP का ऊपर कौन सा भी ट्रैक्टर रहता है, कौन सी भी कंपनी का चलेगा, उसके ऊपर हम अटैचमेंट करके देते हैं। एक्चुअली उसमें क्या रहता है, जो गिरा हुआ गन्ना रहता है वो खड़ा करता है और उसका छोटे छोटे टुकड़ा करके वो लोडिंग कर लेता है। उसके लिए हमको ये मशीन हमने लॉन्च किया है। मार्केट में ये मशीन का प्राइस अप्रोक्सीमेट 1 CR है। वही मशीन हम खाली 33 लाख प्लस किसानों का ट्रैक्टर, यानी कि करीबन 40 लाख रुपए में हम आपको दे रहे हैं। मशीन ये जो है ये पूरा हाइड्रोलिक है और इसका जो हाइड्रोलिक ये सब हम इन हाउस बनाते हैं। अब प्लास्टिक पेपर बैग का जमाना जा रहा है, पेपर बैग का जमाना आ रहा है। किसी भी साइज का पेपर बैग आप कैसे बना सकते हैं, ये भी युवराज हमें बताएंगे। भारत सहित 175 देशों में प्लास्टिक बैन हुआ है। भारत में भी और भारत के सभी राज्यों में डिस्ट्रिक्ट में प्लास्टिक स्टेप बाय स्टेप बैन हो गया है। तो प्लास्टिक को पर्याय करके पेपर ही है। तो इसका डेमो पहले देखिए और उसके बाद आप इसकी कीमत भी जानिए। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी सोचिए। इसकी मार्केट में क्या संभावना है? अभी एक्चुअली कैसा है, प्लास्टिक बैन होने की वजह से सभी जगह पेपर बैग ही चल रहा है। पेपर बैग का मार्केट अभी आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो रोल है ये मार्केट में सभी जगह पेपर्स मिल ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। ठीक है ना, वो ऑल ओवर इंडिया में ये पेपर मिल में ये रोल मिल जाएगा। और बाद में हमको कैसा रहता है, एक ही मशीन में मेडिकल पाउच से लेकर शॉपिंग बैग तक, यानी कि मेडिकल, किराना, ग्रोसरी, बेकरी, होटल पार्सल, हमारा जो वड़ा पाव भेड़ वगैरह पार्सल रहता है, बाद में बियर शॉपिंग के लिए जो ये रहता है, ये सभी जगह हमारा ये एक ही मशीन सभी बैग का प्रोडक्शन करता है। ये 6 लाख तक जाता है, 5,35,000 प्लस GST इसका प्राइस है सर, विद प्रिंटर। हाँ, और आपको अगर इसके ऊपर अगर कुछ प्रिंटिंग करने का है तो प्रिंटर अलग से आता है। वो प्रिंटर का प्राइस 1.5 लाख रुपए है। प्राइम मिनिस्टर योजना जो है PMEGP, इसका सब्सिडी हम करके देते हैं। इसको करीबन अप्रोक्सीमेटली 30 से लेकर 35% तक सब्सिडी मिल जाती है। वो कैटेगरी वाइज रहती है। थोड़ा मतलब 6 लाख रुपया इसकी कुल मिलाकर कॉस्ट है और इस पर 35% सब्सिडी है। और 35% सब्सिडी मिलने के बाद में ये आपको आपके पास तक पहुंच जा सकती है विद ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, वही ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कैसा है, महाराष्ट्र में हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, महाराष्ट्र के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। यहाँ पर आप ये मशीन देख रहे हैं, आप ईंट बना सकते हैं इस मशीन से। फ्लाई ऐश से आप इसका ईंट बना सकते हैं। जो आपकी कुछ बैरन लैंड है उसकी मिट्टी है उससे बना सकते हैं। यहाँ लिखा है मिट्टी प्लस सीमेंट, उससे भी आप ईंट बना सकते हैं। आप बनाने को तो इससे गोबर, मिट्टी, चूना, इस इंग्रेडिएंट को यूज करके भी ईंट बना सकते हैं। ये किस तरह से वर्क करती है, क्या इसकी कॉस्ट है? एक ही मशीन में